जो मैंने ऑनलाइन अच्छे स्क्रीन आसी इज इट नाउ विजिबल एंड ऑडिबल जो फास्ट सो फास्ट क्लास रेजिम देखो ऑब्वियसली खारवला हिस्ट्री टा खारवला टू स्टार्ट करिया पड़ो ना ओडिशा हिस्ट्री कौन करा जिवो ये विद इन 1 वीक वी विल मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लासेस रे आई विल ट्राई टू रैप दैट वन कि बोथ टाइम एको क्लास नवा और बोथ टाइम रे नेकी ताको खत्म करवा बुझ परछन केना जदी दिन को 4 घंटा हेला को आराम से हो 25 आवर्स तो 30 आवर्स एनफ कंप्लीट हो सो ऑब्वियसली खारवला टू ही पढ़िबा तो राइज ऑफ महामेघ वाहन है ना एंड हियर इज द इंट्रोडक्शन तो ता पूर्व तुम देखियो जदि जो ओडिशा और द उत्कल जदि हम देखा है ना द कलिंग जहाँ को हम कहते द डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट नारे जना जाए द कलिंग जदि हम हिस्ट्री देखिबा देन वी हैव टू डिपेंड ऑन दैट इज व्हाट मौर्यन also the Mauryan rule because during the Mauryan rule जो invade ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗକୁ ତାର କିଛି evidences ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ for example ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା inscription କଥା ନେଇଯାଅ और जो ତମର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କଥା ନେଇଯାଅ ବୁଝିପାରୁଛ so these are the source of that means ଆମେ କହିବା history pre history ର source जो pre historical source ना ସେଇଟା ତୁମର ଯୋଉମାନଙ୍କର optional ସେଥିରେ ସାର୍ ପଢ଼ିବେ କି pre historical sources of ଓଡ଼ିଶାର history କୁ କେମିତି ଜାଣିବା so let's say from the caves, from the temples, from the stupas, बुझिपारछ inscription जहाँ छाड़ी के जाइछन्ति से माने so these are the sources that served us बुझिपारछ जोथि हमको ideas मिलुछि about the prehistory and the history of Odisha the culling of history after the Mauryan जदि हम rule देखिबा that was obscure मतलब किछि जणा ही नथिला किना Mauryan rule परे it was obscure not known exactly when this country that regains its independence actually ये सेतबे तो country हिसाब रे जणा दउथला सेतबे तो state कहबानी that time it was a country बुझि बछ केना ये sense of जो हमको state and nation that was not there a sense of nation and state असला तुम्हारा 18th century रे ता पूर्वरु सेमती सेंस ऑफ नेशन और स्टेट नथिला जे तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िथिबो कि सेंस ऑफ जो नेशन और स्टेट ये तमरो आगुरु नथिला बुझिबो तो नेशन स्टेट आगुरु नथिला सेथरे टेरिटरी बास थिला दैट मींस हम केबा आफ्टर द मौर्यन रूल पर हमको एग्जैक्टली तार किसी सोर्स ही नहीं बुझिबो तो गोटे टाइम थिला जाको कहजे डार्क फेज ऑफ ओडिशा nothing is known about that phase कि फेज रे कौन हेची ई जगह रे बा कॉलिंग करे तो सेटा किछ हमको जणा जाय नहीं A flood of light is focused upon a dark period of the history Odisha history देखिबा with the discovery of the Hathi Gumpa inscription हम ऑलरेडी मो कहि कि ओडिसा रे हिस्ट्री जाने को हेले that is the past of Odisha you have to go through the inscription you have to go through the caves you have to go through the stupas जो स्तूप अछि फॉर एग्जांपल तुमको भौमोकर विषय रे जानियर अछि देन यू हैव टू गो थ्रू द स्तूपर्स लाइक ललितगिरी रत्नगिरी उदयगिरी तो सी जगह को एक्सकावेशन करा गला सेत्रु बहुत सारा सोर्सेस मिलिला देन फ्रॉम दैट वी आर नाउ डिराइविंग कि हां दे वर रूलिंग दिस एरिया दिस वर द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया थिला से मनकर रिलीजन एरिया थिला ए एरिया फॉलो करथले so that means हम कहबा in form of cave in form of what art architecture inscription or the evidences which are left let's say iron pillar कथा नहीं जाओ बुझि परछन iron pillar कथा नहीं परबो तमे स्तूप कथा so these were the source हम कहबा जाको source जोटा कि तमरो that is left and that will be the source of knowledge for the present time रे हम ताको ही यूज करबा even हाथी गुम्फा inscription is not deciphered yet किछि इंस्क्रिप्शन को डेसिफर करा जाइछि सबु को नुह एबे भी तापर स्टडी चलछि बस किछि त लिभि भी गलानी तो जहाँ भी दैट मीन्स ये जो डार्क फेज ना दैट फेज को हमें जानिए पहले हमको डिपेंड करे पर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बिलीव करा जाए जोटा कि खारवेला टाइम रे सेकंड सेंचुरी बीसी रे हेइतला बिलीव करा जाए ना
So the fact narrates the Hathigumpa inscription jaha kuhe seita kuhe हमको जाने पड़िबो, and that is the आउ कौन कहूची ना excavation from the Sisupalgoda जोटा कि हमको कहबा iron pillar and the some figures. Sisupalgoda outskirts of Bhubaneswar अछि, so that means हमें कहबा जे Sisupalgoda जो भुवनेश्वर अछि तमरो ओल्ड टाउन रो पछपटे जो गैरेज छक आगु है ना, and Hathigumpa inscription ये होची source of ancient history of Odisha. Ancient history of Odisha को जानने के लिए we have to depend on the Sisupalgoda iron pillar and the inscription or which is the figures that encrypt the different keeps of Udaygiri and Khandagiri कथा नहीं जो खास कर Udaygiri कथा ना वो Khandagiri नुह कहना Khandagiri तो Udaygiri रे inscription बहुत गुड़ा अच्छी तो हेतु भी Udaygiri कथा को आ जाऊँगी है ना, तो Hathigumpa inscription नहीं जो और तो Udaygiri inscription and the figures which are engraved on the different parts हम कहबा जोटा कि Sisupalgoda रो iron pillar वगैरह आपको हमें नहीं था. So these are the source to know the dark phase कौन है क्या exactly हमको जाना है बुझ बच्चे कौन कहला हाँ. So Hathigumpa inscription at Udaygiri hill near Bhubaneswar it पूरा एबे तो near Bhubaneswar कहबानी within the Bhubaneswar in details that talk about the career of achievement of the Kharavela. So what important होची कि Kharavela रो source होची गोटे ही हेड होची तमर Hathigumpa inscription and the Udaygiri cave तार से इथि सब जाना पड़े. The mighty rulers of the Mahameghavana family. Mahameghavana होची तांकर grandfather बुझ बचन कि खारावलंकर grandfather Mahameghavana बुझ बचन. So that means the regnal or the ruling period जति हमें जानिबा we have to difference on the Udaygiri hills and its inscription जाको कहे Hathigumpa inscription. The sole evidences that is left in form of the inscription and caves near the or the outskirts or in Bhubaneswar in form of the inscription and the caves. से जो caves रही है ना सही तरह ही जहाँ तुमको देखिए that is the source. बाकी वो source of history for this particular video होगा सेमती किसी नहीं. तो ये रहेगा. अच्छा ऑडिएबल होती समस्त को जो माने ऑनलाइन रे अच्छो है ना, hope is visible and audible to all. So that means देखो तुम evidences को तो evidences लिखिया पड़ो. Evidences in form of the cave, inscriptions, stupa and some of the हमें कहता like figures किसी figures जहाँ छाड़ी की जाए चंदी ता ऊपर हमको डिपेंड करिया पड़ो हिस्ट्री जदी जानिबा खास करी ancient history है ना. तो ये रहेगा तुमरो फास्ट. दैट मीन्स आई मीन ये टाइम रे बिकॉज आउ किसी हिस्ट्री सेक्टर हिस्ट्री के लिखु भी नथले बुझिबो दिस वाज नॉट ए कल्चर इन इंडिया. तो जदि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे हिस्ट्री एज ए कल्चर डेवलप वेरी लेट बहुत लेट रे बट दैट वाज बाय दैट टाइम डेवलप्ड इन द ग्रीस एंड ऑल दिस जदि यूरोपियन जगह में देखिबा कि तुम जदि कहबो इजिप्ट वगैरह रे डेवलप हे जायतला ना. तो महामेघावानस Hathigumpa inscription talks about the Mahameghavana's. Mahameghavana's होची the grandfather of Kharavela. Kharavelankar होची grandfather. बुझी बच्चों. So the inscription mentioned that is belong to the Mahameghavana Kharavela. Hathigumpa inscription mentioned that Kharavela belong to the Mahameghavana family of Chedi clan. So this is very important. तो ये रहेला कोन कि that means Kharavela also belongs to the Chedi clan. They were the tribes. ये माने थे ट्राइब्स है ना, ये माने ट्राइब्स थे. तो महामेघवाना द ग्रैंडफादर ऑफ खारावेला दे वेर बिलोंग टू ए सेम क्लान जाको हम कहूजे चेदी क्लान. और सेते भी तमे देखि छ कि लाइक मगध कथा भी देखियो है ना, से टाइम रे भी हम देखिले बहुत सारा चेदी क्लान थे. सो दे आर लाइक ए ट्राइबल हम कहबा जोटा कि क्लान थिला. सो दैट मींस हमको खारावेला आल्सो बिलोंग टू द चेदी क्लान and Mahameghavana is the grandfather. So they were ruling देखिबा that is the Madhya Desha or central Odisha. This is what central Odisha. That means ध्यान से सुनिबो ये जो मध्य देश लिखा है that is the central Odisha. Believe करा जाए central Odisha or the Magadha. हमर जो central कारण से टाइम रे जदी तुम देखो सेकंड सेंचुरी BC. सो हमर जो ओडिशा रो जो मिडिल पार्ट को कहा जाए कि आरो सोर्स एग्जैक्टली हमको it's not known. किछि हिस्टोरियन बिलीव करंती कि माने लाइक द कंधमाल ई पटो एरिया रु सब आछंती बुझ बचन दे डिसेंड फ्रॉम दिस सेंट्रल ओडिशा एंड मूव टू द प्लेन को मूव करी. बट किछि बिलीव करंती कि हां दे आर द सब फैमिली और दे आर आल्सो वन पार्ट ऑफ द दैट इज द मगध.
Magadha has been suggested that the branch of this royal family of the that is what Hari ambiguity came to be Kalinga and established its sway over it, or that is the sway कहले तांकर जो आधिपत्य बुझिपरछन over it believe करंती तांकर एक branch of Magadha might be that is a branch of Magadha believe करंती the 24 करते that means ये ambiguity रही देखो ये ambiguity रही there is no such kind of clarity कि whether they were completely or having the clear cut information they were belongs to the Magadha बुझिपरछन or that means a part of royal family रे थिले कि सेमति किछ नै ambiguity अछि believe करंती किछि लोक does not have any kind of evidence to back it बुझिपरछन only having a belief कि हाँ से माने आसी थाई पारे काहे कि because they were from a single clan चेदी डायनेस्टी बुझिपरछन और द क्लान जहाँ हम कहबा चेदी क्लान तो सेथि पई ताको बिलीव कराउची जेतु ए चेदी थिले से माने भी चेदी थिले चेदी क्लान्स तो ये दे वर यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रांग क्लान्स द ट्राइब्स प्ले थिले इनिशियली तो एठी बिलीव करा जाय देयर इज नो क्लियर कट हम कहि परिबा दैट क्लियर दैट एटा मिसी जाईची देयर इज और इट इज नॉट क्लियर दैट व्हेन दे माइग्रेटेड टू कलिंग केते बेले से माने माइग्रेट कले है ना. But from the Hathigumpa inscription, it becomes apparent that the Kharavela was the third member of the, that is what Kalinga Chedi family the third member thile, or the third important ruler ame kahi pariba bujhi parchani. So it is clear that from the Hathigumpa inscription ye hochhanti third member, that means third ruler, or that is we will talk about the ruler, ye hochi third ruler from the Chedi clan, jo Chedi clan setebele rule karuthile. The belief करा जे हाथीगुम्फा inscription रो this person is the third कारण फास्ट होची महामेघवाहन होची फास्ट पर्सन बुझ बचन. तो ये हाथीगुम्फा inscription रो जाना चाहिए बस खाली गोटे स्मॉल नोट बनी यहाँ पर मध्य देश सोर्स कोन ना मध्य देश दैट इज द मगध. किछि लोक बिलीव करंती सेंट्रल ओडिसा रो आसंती है ना एंड दे आर द डिसेंडेंट ऑफ व्हाट चेदी क्लान है ना कोआ जे के दे आर आल्सो ये टाइप और द ब्रांच ऑफ मगध that is Magadha Asicibali royal family रो believe करा जाए the third member. तो sources कोन हाथीगुम्फा inscription है ना उदयगिरी cave then Kharavela. तो आपको हमें ठीक इंट्रोडक्शन देखि देबा. एठी तुम देखि परिबे. So latest views कौची that is what Chetaraja was the father of Kharavela. Chetaraja was the father of Kharavela and Mahameghavana hochi tankara grandfather. So third ruler, third member and the third ruler of from his clan, or that is the Chedi clan है ना. Kharavela introduced as that is the what Aira Airna है ना Airna और ताको Aira भी कहती as the Veera meaning hero but not explains as it a royal title. एटा किसी royal title नो only गोटे meaning Aira or the Veera. Aira meaning that is what Sami, that is the master of Lord. Shami master of Lord. Aira meaning so that is the what Airna. Maha that is what Rajan Maharajan कहले राजा मान का भितर महान or the great among the rulers, the master of lords or the great among the rulers. सेतो तो lord को होता है ना एबे भी को होची my lord है ना. तो that is the what Airna or the Maharajan, the ruler among the rulers, the greatest ruler among the rulers, belongs to what that is the royal family में कही परिबा that is the what जाको कोचे चेदी. The Mahameghavana is considered to be the grandfather of Kharavela, already questioned the founder of dynasty Kalinga, which came to be known as the Mahameghavana after his name. That is Kalinga जो dynasty है ना ताकि तुम कहि परिबो कि कलिंग सेटा गोटे तांकर dynasty भी थिला जोटा कि से माने चेदी clan जो belong करंती. Founder होची Mahameghavana and then the second ruler is that is the what Chetaraja, the father of Kharavela, and third person comes as a Kharavela. जेहेतु there is no evidence about the Chetaraja, so very little things is little like information is known about that person Chetaraja.
Kharavela jodi hame dekhiba, the son of Chetaraja, this is very important, the third ruler of the Mahameghavana dynasty, or jahaku tame kahi paribo Kalinga dynasty, or that is the but Kalinga Raja Vamsa, jahaku kuaje Kalinga Raja Vamsa. Tanko dynasty hochi third, and that information is known, or we are getting information from the Hathigumpa inscription that talks about or precisely records his career and the achievement up to 13 years of his reign. That answer को 13 years तांकर जो ruling period थिला 13 years है ना, that is the what 13 years रो पूरा description तुमको मिलबो कोटी हाथी गुम्फा inscription रे. तो that means summary है कि Kalinga dynasty, the father or the founder of this Mahameghavana, then as well Chetaraja, then as well Kharavela. But Mahameghavana and Chetaraja upare semte किसी विशेष जाना जाए नहीं, because lack of evidences, and that was a phase हम देखिबा, a phase after जेते तम जो नंद dynasty जेते rule करथिल, तम जानछे मगध को नंद rule करूथिले, तापर आसिले किए तमरो को dynasty आसिले मौर्यन आसिले, तो मौर्यन रूल करिया पे स्टार्ट कले, तो मौर्यन जेते आसिले जो ट्रांजिशन फेज थिला से ट्रांजिशन फेज रे कोन होची जणा नै बुझिबो, जेते नंदस रूल करथिले नंदस यूज्ड टू अटैक द कलिंग, that time there was Mahameghavana, तो नंदस रो कंटेम्पोरारी होची महामेघवाहन, तो जेते जेते नंदस अटैक करथिले कलिंग को तापर से जो ट्रांजिशन फेज ता किछि जणा नथिला बुझिबो छ, तो सेटा कंटेम्पोरारी थिले जो महामेघवाहन एंड हमें जो नंदस रूलर दे वर कंटेम्पोरारी, एंड अशोका मध्य जानछो अशोका बुझियो 326 बीसी अशोका, तो अशोका टाइम रे ही नंदस रूल करूथिले हां कि नहीं, जेतोले अशोका इन्वेट करथिला दैट टाइम हु वर रूलिंग नंदस, नंदस थिले ना हमर मगध रे सेतबे सबटु स्ट्रांगेस्ट रूलर्स के थिले नंदस, तापरे सिना मौर्यन डायनेस्टी आसिला परे ताकू रिप्लेस कले नंद को, है ना. तो ये हमको देखिबा दैट इज द कलिंग वंश हम कहबा, ये थ्री इंपोर्टेंट रूलर सोर्सेस हम कहि परिबो के सोर्सेस इज लिमिटेड एंड दैट इज आल्सो कन्फाइंड टू द हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन. ये थिला दीटा स्लाइड रो हम देखि देले ना, बिलीव करा जाय देखिबा कि सेटे थर्ड स्लाइड को आसे नै कि अच्छा ना एठी गोटे चॉइस लाइक द सातवाहनास इन द साउथ द महामेघवाहनास डायनेस्टी एस्टैब्लिश इन द कलिंग ना, ये सातवाहना डायनेस्टी जानचो डेकान रे थिले एग्जैक्टली हमने कोठी थिले डेकान कहले प्रेजेंट डे रो हम जो अछि तमरो तेलंगाना महाराष्ट्र को रूल करूथले सातवाहनास. Satavahanas भी सेकेंड सेंचुरी BC, so they were believed to be contemporary. जदि हम देखबा खारावेला टाइम रे ही सातवाहनास और खारावेला they were contemporary, कारण सातवाहनास they started the what cape architecture in the western India. जो वेस्टर्न इंडिया रे तमे जो केप सब देखुछ जेमती फॉर एग्जांपल नासिक रे जे केप अछि जेते अछि तमरो कोठी अजंता केफ कथा नहीं जाओ, ये जो एलोरा केफ कथा नहीं जाओ, दैट एरिया द केफ ट्रेडिशन दैट वाज स्टार्टेड बाय द ये सातवाहन ट्रेडिशन जो केफ एज ए ट्रेडिशन बुझ बसन, जदियो हमर ओल्डेस्ट केफ कोठी देखा जाय बिहार के तुम जानछो अशोका टाइम रे हितला बुझ बसन बराबर केफ जाको न कहे बराबर केफ, बट एग्जैक्टली दैट वाज हां सेटा हितला किंतु एते ताको लाइक ए रेवोल्यूशन आसी नथिला. सातवाहन जदि हम देखिबा वेस्टर्न इंडिया रे ये माने स्टार्ट करथिले केप ट्रेडिशन ये सातवाहन बुझबोछन, तो सेही टाइम रे हम देखबा खाराबल मध्य से टाइम रे थिले, तो 13 इयर्स तक जो रूल ये 13 इयर्स रे से कोन करछते एटा ही तुमको पचार, तो तांकर डिस्कस द रूलिंग ऑफ दैट इज हम कहबा खाराबल, तो तांकर जो 13 इयर्स रे से कोन कोन को एरिया को फोकस करछते को ईयर रे, तो ऑब्वियसली हम फास्ट से रिकंस्ट्रक्शन करिवे ना, ता पूर्व कलिंग वार हितला बुझबोछन. तो फास्ट आम देखा जो तुम 13 इयर्स आम देखा कैरियर एंड द अचीवमेंट ऑफ खारावेला. सो खारावेला इज रिगार्डेड तो जानते वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द कलिंग डायनास्टी. द 13 इयर्स आम रेगनाल इयर्स को देखा और दैट इज द जहाँ भी अप एंड डाउन at the age of that is the 24 he was crowned as the king by assuming the title of Kalingadhipati, that is the king of Kalinga. The 24 at the age of 24 he became the ruler of Kalinga dynasty or the Kalinga family. एक मिनट तो वाईफाई ଟିକେ वीक ଅଛି ସକାଳ
मोबाइल कनेक्ट कर समस्त मोबाइल कनेक्ट कर दे अच्छा ऑनलाइन रे समस्त को आसुची वॉइस ठीक ठाक एवरीवन फाइन एक मिनट टिके वेट करो वाईफाई टे at the age of 24 he became the ruler of the Kalinga dynasty ଆମେ ତାକୁ କଳିଙ୍ଗ dynasty ବି କହିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ that is the Kalinga Dhipati the that is the king of Kalinga dynasty and gave his subject a sound administration बुझिपारछ तो साउंड एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ आम कह तो तांकर जो 13 इयर्स ऑफ रेगनाल इयर्स को आम देखा जो 13 इयर्स से रूल कर प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी से कर देखा दैट इज इम्पोर्टेंट प्रत्येक 13 वर्ष से कौन कौन कर ओब्वियसली फास्ट इयर से कौन कर फास्ट 2-3 वर्ष ना तो जेहेतु कलिंग वार ता पूर्व होता 261 BC कथा नहीं जाओ तो से कौन करेंगे रिवाइव करने चेष्टा करेंगे आगे कि कलिंग को आगे रिवाइव करेंगे तार कैपिटल बनइबा फोकस करवा इकोनॉमी उपरे फास्ट 2 वर्ष तो से इकोनॉमी आउ रिकंस्ट्रक्शन उपरे फोकस करेंगे देन कौन करेंगे देन ही विल तापर से बाहर कथा भाविबे आगे घर को संभालिबो देन सेफ्टी सिक्योरिटी एवरीथिंग देन ही विल ट्राई टू एक्सपांड हिज टेरिटरी तो ऑब्वियसली ये रहबो स्टेजेस ना तो हम देखिबा इन हिज फास्ट रेगनल इयर्स he involved himself in the renovation work by repairing the gates and buildings of the capital Kalinganagar तो जदि आम देखा जो कैपिटल कलिंगनगर को बिल्ड करने चेष्टा कले एबे तो जानते जो शिशुपाल गड़ा जो अच्छी तुम बुझिपार इट सेल्फ यूज टू बी द कलिंगनगर दैट इज द कैपिटल जोटा कि कह कैपिटल ये जोटा अच्छी एक्चुअली ये कलिंगनगर था गोटे मिनट ये जो कलिंगनगर ना ये कलिंगनगर सेटा नुह यहाँ शिशुपाल गड़ा और कलिंगनगर टी डिफरेन्स ये कलिंगनगर हूँ जो तुम गंजाम अच्छी जो बिलीव करा कि आम गंजाम पर कौन टा जो डिस्ट्रिक्टा श्रीकाकुलम श्रीकाकुलम तो बिलीव करा एरिया रे थिला ये कलिंगनगर ये जो कलिंगनगर ये लिखा है हिज कैपिटल दैट यूज टू बी द कोस्टल सिटी बुझिपार श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट ही आखपाखे थिला तो बिलीव करा कि से समय कौन है बिकज ऑफ द साइक्लोन दैट वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाइथिला ताकू से रिकंस्ट्रक्शन करेंगे he employed people to dig the deep lakes तो ये देखो लेक करथिले and to create the beautiful gardens as well so that means beautification and construction ऊपर फोकस करथिले फर्स्ट ईयर ऑफ हिज रेगनल ईयर तांकर जदि हम देखबा कलिंगनगर सो ये जोटा हम कहली श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है ना तो सेठी थिले बिलीव करा जे कि इट वाज इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट डे जदि हम देखबा तो सेठी कलिंगनगर थिला व्हिच वाज डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन तेणुक से कौन कले रिस्टोर्ड बैक कले रिपेयरिंग कले द बिल्डिंग्स द गेट्स द कैपिटल्स एंड नंबर ऑफ लेक्स वर आल्सो हमको डिग करा देइथिला टू क्रिएट द ब्यूटीफुल गार्डन्स जा भी हो दिस रिपेयर्स एंड सम अदर पब्लिक वर्क्स मध्ये करा जाइथिला ईयर कॉस्ट 13 इयर्स अदे हम देखबा 35 lakhs ऑफ कॉइन्स फ्रॉम द रॉयल एक्सचेकर तो तापे केते खर्च होइतिला 35 lakhs ऑफ कॉइन्स तो एटे डेटा दरकार नहीं बस खाली लिखिबो कि हैंडसम rupee was spent for the beautification and restoration project है ना तो ये रहो फास्ट ईयर तक देखो दैट मीन्स दिस फैक्ट हैज बीन एम्पली दैट इज व्हाट आम कहबा corroborated with the excavation of the Sisupalgada that brings out the remnants of the that is what defensive that is rampart gateway and the high roads हम कही परिबा so that means the fact has been amply but that means हम कहबा काफी evidences अछि amply that is corroborated with the excavation of the Sisupalgada brings out the remnants of defensive rampart है ना gateway कहले एथि जो सब अछि तमे देखिबो एबे भी आयरन पिलर तुमको देखा जबो ए रीजन रे
तो दैट मीन्स होल शिशुपाल गड़ा को पूरा डिस्ट्रॉयड कराइला हाँ कि नहीं कलिंग वार टाइम रे पूरा यहाँ पूरा शिशुपाल गुड़ा फिनिश हो तो दैट मीन्स एथरू भी आमको कौन कले वी आर हैविंग एम्पली एविडेंसेस हमको एठी भी मिल जोटा कि एक्सकावेशन हवा पर एठी भी जनाऊँ कि एथिरे बहुत सारा रेमनांट अच्छी डिफेन्सिव रैम्पार्ट्स अर्थात ये मैंने डिफेन्स करते और से जानते लैक्स ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड मोर देन तो एथिरे कलिंग वार जो तुम तो समस्ते जानछ कि 2000 दैट इज 261 BC जो होता तो मोर देन लैक्स peoples were died and thousands were wounded कुआ जाइथिला कि जो दया रिवर अच्छी ये पूरा रेड कलर होइथिला बुझो बिलीव करा जाए कि इट वाज ब्लड सेड और से पुणी कौन कहे रिमोर्स कर निजको एंड से तार सोर्ड को से पोती देवे क्विट करदे ना तांकर जो बुझे तो से वार्ड को क्विट करदे एंड नाउ ही बिकम ए कौन द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म बुद्धिज्म फॉलोअर हो पीस को अडप्ट करदे बुझे तो ये बिलीव कर दैट मीन्स दैट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ये पूरा डिस्ट्रॉयड होता कौन पे ना से किसी एविडेंसेस देखा जाए रेमनांट्स ऑफ द डिफेंसिव रैम्पार्ट्स गेटवे ये तुमको किसी देखा से बिलीव करा जाए ये मध्य सब डिस्ट्रॉय जो होता ताकू सब रिवाइव कर से लगी पड़े हियर यू कैन सी द एक्सकावेशन ये आयरन पिलर गुड़ा देखि परिबो ये सब आयरन पिलर एबे भी अच्छी एक्सकावेशन साइट here is the तुम्हारा outskirt of city सेकेंड ईयर द सेकेंड ईयर से कौन करबे एबे फर्स्ट ईयर रिस्टोरेशन काम खत्म बुझि पछन द सेकेंड ईयर एबे धीरे धीरे इकोनॉमी को और मिलिटरी ऊपर फोकस करबे तापर एक्सपांडेशन कथा भाबिबे और हाउ टू एक्सपांड द टेरिटरी इन द ऑल डायरेक्शन द खारवेला possessed a large army consisting of the infantry cavalry elephant and chariots दैट मीन्स ये जो चैरियट ट्रेडिशन सेबेठू अच्छी आज जाए बुझे ये जो चैरियट्स एंड दैट यूज्ड टू बी द ड्रिवन फोर्स इन द वार रे चैरियट्स रो बहुत इंपोर्टेंस थिला बुझे सो खाराबेला सेकेंड ईयर्स रे कौन कले तांकर आर्मी को बिलीव करे दैट मीन्स हमको सिंपल के ही फोकस्ड ऑन द आर्मी बुझे आर्मी ऊपर फोकस कले एंड दैट टू बी द डिफरेंट फ्रंट रे कैलवरी जदि हम देखिए इन्फेंट्री एलिफेंट कथा नहीं बिकॉज एलिफेंट वाज द सिंबल ऑफ पावर दैट टाइम है जमती कि फॉर एग्जांपल नंदस कथा हम कहूँ कि जितेबले 326 BC रे अलेक्जेंडर जो अटैक कले बैटल ऑफ पोरो तो जानते पोरोस बैटल ऑफ हाइड्रास ताकू भी कहुए बैटल ऑफ पोरो भी कहते पोरोस बुझे तो जम्मू काश्मीर जो होता तो से बिलीव करा कि नंद दैट टाइम नंद वाज पोजेसिंग 20,000 एलिफेंट्स बुझे 20,000 एलिफेंट्स नंदस पाखे थे दोज हु वर रूलिंग द मगध बुझे से जो सोल्जर माने दे वर आस्किंग और दे सेड दैट वी वुड नॉट मूव टुवर्ड्स द प्लेन को आउ जीवु ना कहले यमुना आगु को आम जीवु ना जो पंजाब आगु को जीवार ना बिकज दैट विल डायरेक्टली क्लास विथ द नंदस और नंदस दैट टाइम दे वर हैविंग जो कहले कि 20,000 और मोर देन दैट बिलीव कर मतलब मु तो नंबर मन पड़ुनी मतलब मुझे कहूँ मिनिमम दैट टाइम दे आर हैविंग 20,000 एलिमेंट जोटा कि दैट शोज द माइटी जोटा नंदस से अलेक्जेंडर गोटे प्रोवर्ब अच्छे ना कि से क्या हारी किंतु निज सोल्जर पाखे से हारी तो सोल्जर मैंने कहले कि वी कांट मूव दिस वे ये बिकज आज वी हैव कवर्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस हैविंग फाटिग बुझे कार डिजीजेस रोग ये सब बहुत फाटिग आसो बुझे बिकज ऑफ दैट फाटिग एंड they heard about the numbers के that would be like के हमें कहवा के at the end of the day you will have a defeat तो सेटा ताठू बेटर के रिटर्न करी पड़े जुआ रिटर्न कला पर डेथ ही जुआ बुझे ईरान रे तांकर डेथ ही जुआ तो इवन से निज डायनेस्टी भी पहुंची पाले तो ये जदि हम देखी परवा तो दैट मीन्स ये जो चैरियट्स वगैरह ये देखी पारो कि हाँ से फोकस करूले हैविंग मेड एडिक्वेट प्रिपरेशन ही undertook the expedition against the powerful Satavahana kings मैं तुमको कहती कि ना ये से कौन करियो फर्स्ट ईयर कंस्ट्रक्शन कर देले जहाँ करिया कथा सेटल कर दे सेकंड ईयर ए आर्मी ऊपर ध्यान कले देन ही विल ट्राई टू एक्सपांड द टेरिटरी इन ऑल डायरेक्शन बुझे ऑल डायरेक्शन एंड इट वुड बी बेटर टू अटैक द सातवाहनस बिकॉज ये सातवाहनस जो एरिया थिला दैट वाज टेरिटरी अप टू ओडिशा कहना सातवाहनस कहले जो माने कौटी तुमको डेकान को रूल कर डेकान कहले महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लगी ओडिशा को जदि आम देखा दैट टाइम ये तो छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश ये तो किसी ना
तो दैट टाइम ओनली जियोग्राफिकल एरिया स्टेट तो नथिला जियोग्राफिकल एरिया तो जियोग्राफिकल एरिया रे ये थिला दैट मीन्स द सातकर्णी ये तो जानी परिबो सातकर्णी गौतम पुत्र सातकर्णी वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट रूलर बुझी बटे जी की तांको टाइम रे बहुत सारा केफ आ बहुत मध्य एबल रूलर थिले ही वाज ए वेरी एबल रूलर सातकर्णी गौतम पुत्र सातकर्णी ना तो सुनी थो पक्का है ना तो ही वाज ए वेरी डेंजरस रूलर एंड स्ट्रांग एनफ टू डिफेंड हिज टेरिटरी बुझी पड़े तो ये टाइम रे देखिए बट सातकर्णी होची तमरो कार सातवाहना डायनेस्टी रो सातवाहना वर द किंग्स ए माने थिले जे माने डेकान पूरा रूल करथिले वर्तमान जदी हम देखबा जे तुम्हारा तेलंगाना महाराष्ट्र किछि पार्ट सेति एबे भी देखिबो महाराष्ट्र और तेलंगाना भीतर कॉन्फ्लिक्ट चले एबे भी कारण एरिया को तो किछि एरिया कर्नाटक कहंती एटा आमो एरिया कि ये कहंती तांको एरिया तो टेरिटरी डिस्प्यूट जेमती हमर कोटिया विलेज सेमती एवे तांकर भी डिस्प्यूट अछि तो इलेक्शन आसले तांकर भी बाहर जेमती हमर कोटिया विलेज इलेक्शन आसले उठे तांकर भी सेमती देखबो एबे चलछि इशू तो कर्नाटक और महाराष्ट्र भीतर तांकर इशू चलछि सो फ्रॉम दैट टाइम हमें देखि परिबा तो ये तुमको रहे तो सातकर्णी रूलिंग ऑफ द वास्ट एम्पायर को रूल करते कंप्राइजिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे महाराष्ट्र में तो कहि मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश रीजन आंध्र प्रदेश तवरी तेलंगाना ये होल रीजन एंड कर्नाटका दिस होल रीजन दैट मीन्स हमें कहबा सिंपल द डेक्कन जो तुम्हारा प्लेट्यू रही ताको पूरा रूल करथला गौतम पुत्र सातकर्णी एंड दैट वाज हैविंग और दैट टेरिटरी हिज टेरिटरी टच्ड विथ द कलिंगा सेटिफाइन डायरेक्टली एंगेज हेइतले सो खारवेलस आर्मी एडवांस अप टू द कृष्णा रिवर कारण साउथ खुजबो तो एपटे पूरा से रूल करूथले एंड डिसीज द सिटी ऑफ दैट इज ऋषिका नगर है ना ऋषिका नगर which was the obviously situated within the Satavahana territory सातवाहना टेरिटरी मतलब ऋषिका नगर that would be near the Krishna river हमें कही परिबा so he moved towards the south to challenge the Satavahana ruler गौतम पुत्र सातकर्णी है ना and besieged the city of that is what ऋषिका नगर so obviously ऋषिका नगर from the Satavahana territory तो ये रे तांकर expansion towards the south his expansion towards the south तापर से नॉर्थ को जेबे फोकस करिवे ना नॉर्थ को सेते बेले फोकस करिवे when there would be weak ruler of मगध जेतबे मगध रे गोटे वीक रूलर आसीबो सेते बेले ही से फोकस करिवे कारण है ना तो ये रे सेकंड जति हम रेगनल ईयर देखबा द सेकंड ईयर ऑफ हिज रूलिंग ही revived his military or strengthened his military force chariots जहाँ भी दरकार war पाई to defend his own territory and then expedited towards the south to challenge the Satavahana and also he got the victory by what acquiring the that is what ऋषिका नगर अच्छा तुम को वॉइस आसुची जो माने ऑनलाइन रो छ एवरीवन एक मिनट आसे ना ठीक है थर्ड ईयर एबे देखो फास्ट दैट मीन सेकंड ईयर विक्ट्री मिलला तो विक्ट्री आसला तो सेलिब्रेट करिवो ना तको ना सेलिब्रेट करिवो ना तो थर्ड ईयर रे हम देखिबा सो थर्ड ईयर रे हम देखिबा किछि कोन करूछंती आफ्टर द सदर्न कैंपेन द खारवेला प्रोवाइडेड दैट मीन्स व्हाट एंटरटेनमेंट टू हिज सब्जेक्ट्स इन द थर्ड ईयर एबे देखो तो खुशी एबे आसिले रिटर्न करिकि नाउ सम मैरी मेकिंग विल बी देयर बुझि पड़छ सो दिस ईयर इज डिवोटेड फॉर द व्हाट एंटरटेनमेंट for his subject कि हाँ हमें किसी achieve करे छे so there must be celebration after every sort of achievement so that means Kalinga Nagari the capital of Kharavela was overwhelmed with the joy and jubilation in the third years of the that is the regnal year third or the ruling year third year first year reconstruction kale second year expedite kale and increase the territory third year कौन कले merry making of the entertainment the Kharavela was that is what proficient in all arts of the music and dance and this is believed that the Odissi dance that was started during his time जो ओडिसी डांस ये तो आजिर नुह ना से जो इमेजेस देयर सो ये बिलीव करा जे तांको टाइम रो से ट्रेडिशन डेवलप हेके आसी छी बुझ पछे ऑब्वियसली इट लिखा है म्यूजिक एंड डांस and it is I कहबा we can't like deny the fact that Odissi does not have any kind of interlink or the relation with the Kharavelas so it is believed from the because the temples देखिबो caves देखिबो there is the images जो images होची so since these are the images जो हमरो images रची they are the evidence
that advocated that the music and dance were patronized by the rulers. His, he organized various performances where the dance, music and both vocal and instrumental took place. That means ये जो मतलब cultural practices ये सेवेंटू अच्छी बुझिपारे तो आपको तुम लिखिबो डांस म्यूजिक मैरी मेकिंग एंटरटेनमेंट दे वर इन द थर्ड ईयर सो ही अरेंज्ड दैट इज द सेरिमोनियल्स एंड द सोशल गैदरिंग जेमति कि फीस्ट जेटा मु कहली मैरी मेकिंग एक्सेट्रा फॉर हिज सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट मान को तो खुश करिया पड़िबो देन एबे फोर्थ ईयर रे पुनी प्लानिंग करबे अरे खुशी मतलब ठीक फीस्ट टाइप रो बुझिपारे मैरी मेकिंग सो दैट मीन्स आम कह थर्ड ईयर को से डिवोट करते फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज है ना ऑल सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक द डांस म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंटल टुक प्लेस ये सब देखा मैरी मेकिंग सेरेमोनियल्स एंड द सोशल गैदरिंग एज वेल ये सब तुम थर्ड रेगनाल ईयर से करते है ना तो ये कारण जो तुम खारवेला उपर लिख युवा ही लिखा पड़ो तुमको तांकर जो 13 इयर्स पूरा गोटे गोटे सर्ट रे लिख पूरा 13 इयर्स बहुत लंबा हो तो सर्ट रे लिख कि हाँ कौटी से कौटा डिवोट करते है ना हो थर्ड ईयर देन जो टाइम पढ़ला टाइम ही लिखिदेव अल्प अल्प सर्ट देन फोर्थ ईयर द फोर्थ रेगनाल ईयर द वार ड्रम ऑफ द कलिंगा और हर्ड अगेन तो दैट मीन्स एबे जो देखो एक मिनट फोर्थ ईयर ना फोर्थ ईयर पुणी वर्क एबे कौन चल एक्सपेंशन ना एबे धीरे धीरे स्टेबिलिटी आसीगला बुझिपार कारण फास्ट से फोकस करते निजर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वगैरह कला नाउ द वर्ल्ड ड्रम ऑफ कलिंगा अगेन हर्ड बुझिपार दैट वाज हर्ड अगेन द खारवेला मोबिलाइज्ड हिज आर्मी मार्च टुवर्ड्स द डेक्कन अगेन डेक्कन पुणी थर नेले एंड दिस टाइम इट वाज रथिकास एंड द भोजकस okay so this time they were he led his soldier his force against the Rathikas and the Bhojokas lying respectively in the south and the north of Nasik region were conquered. Now these Bhojokas they were ruling Gujarat and Maharashtra region. ये माने गुजरात को रूल करुले से टाइम रे भोजकस बुझिपार दे वर जो गुजरात रे तमर ये माने रूल करुले भोजकस रूलिंग द गुजरात एंड महाराष्ट्र पार्ट दिस राथिकास दे वर रूलिंग जदि आम देखा टुवर्ड्स द डेक्कन एमाने थिले डेक्कन रे है ना एंड भोजकस थिला गुजरात रे तेणु बिलीव करा जे जो कलिंग थिला हमर दे मतलब खारवेला एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी अप टू गुजरात सेतमे सूरत जाउछन्ते बोते ठीक अछि जहाँ भी हो so that means it is believed the Rathikas and the Bhojaks they were also defeated and he expanded his territory up to present day Gujarat बुझिपार ये जान तो होल नासिक तो जान ओबियसली बहुत पाखे गुजरात रो तो है ना ये रीजन जे पूरा कंकर्ड करते दैट मीन्स नाउ साउथ पर एबे वेस्ट को भी से कंकर्ड कले तापर नॉर्थ को फोकस करबा और फाइनल रहबो मगध बुझिपार तो टिके जॉइन कर देई था ऑनलाइन रे बारंबार एटा डिस्कनेक्ट होची नले गोटे काम कर डोरटा खोल देला देखा टिके स्ट्रेंथ जदी आसीबो again there was war and he expanded his territory up to जदि हम देखा that is what present day Maharashtra and Gujarat and he collected जदि देखो and जो Rathikas and Bhojos they paid homage and booty to Kharavela ठीक है ज्वाइन कर देते समझते है ना म्यूट कर दिया so he now he got the booty or that is the what ଆମେ कहबा ହେଇଯିବ ଜଏନ୍ କରିଦେଲ
So now he got the booty, a handsome booty ଆମେ କହିପାରିବା, that is the word simple, it would be huge booty. smoke ନା ହଉନି ନା କଣ? ବୁଝିଲା ତମର ଅଛି ତମର ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି ତମର ठीक ଅଛି तो नेक्स्ट फिफ्थ ईयर को हम देखिबा ना फिफ्थ ईयर एमबीए देखिए तो फोर्थ ईयर तो फास्ट एम देखले फर्स्ट ईयर रिकंस्ट्रक्शन कले सेकंड ईयर रे कोन कले से साउथ को मूव कले थर्ड ईयर रे मैरी मेकिंग फोर्थ ईयर रे अगेन वेस्ट देन सब बेले से गोटे वर्ष गैप नहीं देन फिफ्थ ईयर एबे देखिबा तो जो पैसा आनिले जो बूटी मिलिला बुझि परछ ना फोर्थ ईयर रे दैट वुड बी नाउ इन्वेस्टेड दैट बूटी वुड बी इन्वेस्टेड नाउ दैट मीन्स ई जे तुम देखि परिबो कि लास्ट लाइन the Vojokas and Rathikas they paid homage and the booty homage अर्थात कौन कहलो homage and booty ର meaning होची booty means simple gift money and homage means we have adopted you as the master बुझी पड़ homage ର meaning होची that हाँ हमें we regard you as the master and that is why we are now gifting you बुझी पड़ तो homage ର meaning सही है तो ये that means respect दवा then हम देखिबा रोल ऑफ खारावेला इन द फिफ्थ ईयर रे तमे देखो रेग्नल ईयर रे बेनेवोलेंट किंग रिफ्लेक्टेड इन द फिफ्थ ईयर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तो फिफ्थ ईयर रे तो देखो से आसले दिस ईयर खारावेला एक्सटेंडेड हिज canal हम कहबा जो इरिगेशन पई है ना दैट इज व्हाट तांसुलिया रोड अप टू कलिंगनागारी दैट मीन्स canal ऊपर फोकस कले एग्रीकल्चर ऊपर फोकस कले द canal वाज excavated 300 to 100 years old before the king Nanda, a Nanda king, for the purpose of irrigation. ताले हम कहबा ए जो canal टाकू excavate करा जाय छै टाइम रे तो बिलीव करा जाय कि गोटे नंद किंग रो पूर्वरु चला सेटा excavate हेछि तो दैट मीन्स ए ऑब्वियसली canal को पे रहबो irrigation माइट बी देखो से टाइम रे क्लाइमेटिक कंडीशन कोन थाई पारे कि हां किछ ड्रॉट वगैरह ही थई पारे जो कि से थाई चाहूले कि फार्मर्स मान के इनकम बढ़ू है ना एंड एटा भी आउ गोटे ही पारे कि जो बूटी से आनी थे दैट बूटी इज नाउ इन्वेस्टेड इन फॉर्म्स ऑफ द और फॉर द बेनिवोलेंस और फॉर द गुड पर्पसेस ऑफ द पीपल लोक मान को पई भी कहि परिबा कि जे इन्वेस्ट कर देले ताको भी देन 6th ईयर एबे पुनी वार एमे देखिबा वार होची कि नहीं तो एबे कोन करे इन द 6th ईयर in his reign the Kharavela did not undertake na एठी किछि नहीं से war campaign rather he devoted himself for the welfare activities of for his subject for example जेमति कि remitted the taxes कहले टैक्स छाड़ देवला benevolence ले both urban and the rural area of his kingdom both area को फोकस कले है ना तो दैट मीन्स बैक टू बैक वार पर जति हमें देखिबा तो रेमिटेंस ऑफ द टैक्सेस कहले टैक्स को छाड़ी देबा सो दैट द पीजेंट और द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट छले they will get हम कहबा जो पीजेंट माने अछंती the peasant will get some sort of relief तांको किछि रिलीफ मिल जिवो है ना सेति पे तो से कैनाल इरिगेशन कले तो एथरे कोन कले कि रेमिटेंस ऑफ टैक्सेस एंड द बेनेवोलेंस ताको सेठु जोना पड़ी जे बोथ फर्दर हम देखि परिबो that clearly shows that the treasury of the Kharavela was overflowed with the wealth नहले टैक्सेस को काहे कि रेमिटेंस देबे ऑब्वियसली जेतरो जन इरिगेशन करूचंती है ना टैक्स को छाड़ देउचंती रेमिटेंस देउचंती दैट शोज दैट पर्सन वाज हैविंग और दैट किंगडम वाज हैविंग प्रीटी गुड वेल्थ टू सर्व हिज टेरिटरी और टू सर्व हिज पीजेंट में कहि परबा किबा सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट कह दो सबटू बेस्ट सब्जेक्ट को एवरीवन पीजेंट को ओनली सेक्शन को बुझेइबो तो दैट वुड बी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट को से इजीली देखि पारुथले दैट मीन्स सोर्स ऑफ इनकम बढ़िथिला तो से सोर्स ऑफ इनकम कुआडू बढ़िला बिकॉज ऑफ एक्सपांशन ऑफ हिज टेरिटरीज बोथ west and south and that money which would be invested here for the reconstruction and the development activities the 5th or 6th year से तांकर diverted for his benevolence or for the benefit of the its own subject पई दे देले irrigation कले taxes को कर देले बाकी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे कर देले से then 7th year को जदि हम देखबा 7th year of his rule the Kharavela attained the fatherhood
His chief queen, known as the name the queen of, that is what, Baji, that is Graha, Baji Rajgraha, है ना, Rajgraha, Baji Rajgraha gave the birth to a son. That means fatherhood, 7th year रे तांको fatherhood, he attained this fatherhood. The queen named तुम देखियो Vajira Graha. That was the 7th year. Then ଆମେ 8th year को आसिबा. तो 7th year रे खास बस खाली मान तो कि he attained the fatherhood. Then 8th year. तो 8th year को जदि ଆମେ देखिबा, 8th year of regnal year important सेथि पे ଆମେ देखिबा. Kharavela led an expedition. This is very important, expedition. कुआडे north को नबो, कारण west और south already finish हेई सारिछि. Now we will focus on the north. Attack the city of Rajgriha. Already जानिଛ Rajgriha कार capital थिला. That is the what, Magadha. बुझि बचन, Rajgriha capital of Magadha. Now that means हमें Magadha और Rajgriha तमे जदि देखिबो Rajgriha used to be ये strategic point, जाको कहजे गोटे strategic point, जो that means बुझि बच जो Magadhas they were having capital in form of Rajgriha, कारण आकु invade करिवे difficult थिला because of geographical inaccessibility. So geographically inaccessibility and iron ए दीटा पाखरे मिलुथिला Rajgriha, सेति पे Magadha रूल करि परथला एते बड़ एरिया को. तो Magadha जो माने सीक्रेट ऑफ Magadha रूलिंग कि Magadha एते बड़ जो तमे जानछो कि जो तमर कोन केते 14 ना 16 महाजनपद केते जे 16 महाजनपद थिला ता भितर Magadha इमर्ज कला एज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल. काहे की बिकॉज़ ऑफ देयर ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज द Rajgriha कैपिटल, जोटा को कि अटैक करिबा लाइक इट वाज लाइक कोन कि इट वाज इम्पॉसिबल, कारण इनविंसिबल. बुझि बछ. तो ये एमिति थिला कि ताकू अटैक करिया बहुत डिफिकल्ट, कना गोटे साइड रे पहाड़ गोटे साइड रे वाटर, तो सेठी कि अटैक करि परिबो नै. ज्योग्राफिकल लोकेशन आरो बहुत भलो थिला. ऑन द टॉप ऑफ दैट एठी जो सोर्ड बना होतला ना, दे आर कॉल्ड एज द बेस्ट सोर्ड इन द वर्ल्ड, कारण एठी जो आयरन मिले पाखरे. बुझि बछ. ये आयरन रे जो सोर्ड बना होतला कोन अशोकार सोर्ड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड इन द वर्ल्ड. तो से जो क्वालिटी ऑफ आयरन मिलुथला ता द्वारा वेपन बनि पारुथला सोर्ड, और जो थरा पई से माने रूल करि पारुथले. तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बहुत इंपोर्टेंट थिला तांको पई. दैट इज व्हाई दे मेड द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ Rajgriha. बट जदि हम देखिबा ये जदि हम धीरे धीरे ऑब्वियसली अप एंड डाउन तो रहिबो. बुझि बछन. सेति पई तमर काशी की कुआ जे द लिविंग सिटी, हां दुनिया रे गोटे ही सिटी लिविंग सिटी, दैट इज द काशी, जार आज पण तो डेथ हेई बस साइकिल रे जाई नहीं, कना जेबेठू से हिची सेबेठू चलीची. फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडस वैली सिविलाइजेशन तार डेथ हेई जाईची, पुनी आउ गोटे केबे सेठी सिविलाइजेशन स्टार्ट हेबो से एरिया ह्यूमन सेटलमेंट, किंतु आरो सेमिति चलीची कंटीन्यूअसली. तो दीज आर लाइक द लिविंग सिटीज. ये एबी भी राजगृह रे लोक रहउछंती, से भी थिले. बुझि बछन. देन द बराबर हिल गया डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी मु कहछि, बराबर केफ कथा भी तुमको कहछि कि दीज आर द जदि हम देखबा द 8th year रे से कोन कले एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, दैट इज द Rajgriha, एंड डेवास्टेटेड दैट इज व्हाट, that is Gorathagiri, which is situated in the Barabar hill of Gaya districts. Gorathagiri, गिरी कहले फॉरेस्ट. तो ये रीजन को दैट मींस हम कहबा ए जे तमरो गया डिस्ट्रिक्ट रहिछि जोटा कि झारखंड को लागि कि प्रेजेंट डे रे एटी हिल्स किछि अछि. तो ये हिल ऊपर भी तमरो बराबर केफ मध्य रहिछि, जोटा कि ओल्डेस्ट केफ दैट वाज बिल्ट बाय द अशोका. तो अशोका टाइम रे हितला एंड डेवलप्ड फॉर द बुद्धिज्म, है ना. तो ये जे बराबर हिलटा मनखो गया डिस्ट्रिक्ट मध्य आउ गोटे फेमस एरिया अच्छी जो तुम ग्लास ब्रिज टाइप गोटे अच्छी जमी चाइना रे अच्छी, है ना. ये भी तुम ये अच्छी, ये भी इंडिया यूनिक वन. हिज ट्रिम्फ at Rajgriha created a terror among the, that is हमें कहबा what, Yavanas, है ना, who were then in occupation of the Mathura. So that means northern plain them simple हमें कहबा कि that was a terror was spreading in the northern plain. That Yavanas who were ruling the Mathura, पामे कहबा जो हमारा that is the Dwap region of Ganga and Yamuna. So Yemani मध्य they were also frightened. A terror was spreading across the plain that somebody has knocked the door. Somebody was knocking the door for their existence. So their existence was at stake. तांकर जो existing थिला सेटा stake को आसी देइथिला.
So that means whole हमें plain पे create करते havoc. After his success, that region he had sorry they had planned an attack on the Magadha. Hearing the exploit of the Kharavela, the Yavana kings fled away from the Mathura. ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏମାନେ ମଥୁରା ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେ. Then Yavana rulers whose name is read doubtfully as that is what Dimita or that is what Dimata ଯାହା ବି କହିପାର might be that is what Demetrius or that is the Menander ଯାହା ବି କୁହାଯାଏ different scholar different ନାଁରେ କହନ୍ତି ଯେ Dimita he fled from the Yavana's king ଇଏ ବି fled କହିছে କାରଣ that is because of the fear ତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପଇସା ମିଳିଲା booty then again he collected also booty ତାକୁ booty ବି ଆଣିଲେ so that means ଆମେ କହିବା कि ये northern plain को भी छाड़ी नांती बुझिपाରୁଛ ନା exploitation कले और that was also exploited the Mathura region and the plain region was exploited. तो प्लान थिला है ना सेति पई से कोन कले डर की पळेले बट इठी कोन अब हम देखिबा तो मथुरा दैट मींस एरिया मध्ये तांको अंडर आसी जाइतिला द 9th ईयर हम देखिबा दैट इज द से कोन कले गोटे पैलेस तयारी करे जाको कुआ जे दैट इज the great victory palace the great in the 9th year he built the great victory palace kana jo jitila pare back to back देखो south north west everywhere he was getting the victory that is what Mahavijaya Prasadam है ना that is what Mahavijaya Prasadam by spending 38 lakhs of coins in order to commemorate है ना his victory in the northern campaign. He had also distributed the wealth gained from the exploit among the Brahmins and Arthas, or that is Arhats of his empire. They are the different like communities, Arhats and Brahmins. तांको भितर से कौन कले distribute कर देले सब. Then 10th year को से focus करियो 10th year हम देखिबा 10th year Kharavela was that is what embodiment of the principles of politics upar dele diplomacy and peace that is what directed the army towards the north for the conquest jedi ame dekhi parba and the result was obscure bartman jana nahi तो 10th year कोन कले को जिनस को फोकस कले द पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी पीस एंड डायरेक्टेड हिज आर्मी टुवर्ड्स द नॉर्थ टू कॉन्कर द मगध बट ता विषय आउ बेसी किछि हमको जଣା नाही कि वेदर ही वाज एबल टू कॉन्कर दैट और नॉट ऑब्स्क्योर ही जाई पहले हिस्ट्री सेमती आउ किछि हम पाखरे एविडेंसेस नाही नो एविडेंसेस तो 9th ईयर हम दैट मींस हम देखिया विक्ट्री परे तांकर कोन कंस्ट्रक्शन ऊपर फोकस कले सो 8th ईयर हम देखिथिले विक्ट्री तांको मिलिबो है ना देन आसीबो तमर 11th ईयर नाउ in the 11th year he defeated a confederacy in the southern power of the south power might be केते जण मिसी की करथिले गोटे confederacy or let's say the Satavahanas आउ जे भी थिले बुझि परथि तांकर गोटे confederacy थिला ताकु से भी डिफीट करि पारथिले द ए जो confederacy कहार थिले देखो that is the Cholas Pandyas Satpuriyas and that is what Kerala Putras and that is Tamra Parnis so they did the confederacy and that was also defeated. So semane madhya the confederacy was defeated in the hand of Kharavela. So Kharavela that means ethru jana paduchi his supremacy and his power and management also kana management बहुत बड़ा important. So southern power को again he defeated the southern powers जो मन की cumulatively आसीथिले with the confederacy like the Cholas, Pandyas, Satpuriyas that is what Kerala Putras and that is what Tamraparnis. तो ये सब थे he secured a large amount of jewels, pearls, precious stones as a symbol of allegiance. That means the allegiance that is like the confidence, like like we shows our allegiance towards the constitution. So that means the respect, simple respect. Allegiance means respect.
तो जेमती आम देखिए तो 11th ईयर तुम देख he defeated the cumulative power of the confederacy of the south. That confederacy was done by Pandya, Cholas, Satpuriyas and Kerala Putras, and that is the Tamra Parvis. तो ईमान को डिफिट करते ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖ huge amount of jewels, balls and precious stones as a symbol of allegiance. तो ସେମାନେ ବି ଦେଇଥିଲେ है ना. Then 12th regnal year Kharavela led campaigns against that is what Bruhaspati Mitra, the Sunga ruler of the Magadha. कारण तुम जानते मगध को डिस्ट्रॉय किए करथिला सुंग. मगध को किए डिस्ट्रॉय करथिला सुंगस. ना सुंगस दे वर देयर इन मगध. ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମଗଧକୁ ଏବେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ବୁଝିପାରୁଛ. And he inflicted a crushing defeat on the Magadha king and also on the ruler of Anga. Anga गोटे टेरिटोरी थिला जानिछे तमे जो तमरा 16th महाजनपद सेतले आंगा भी गोटे टेरिटोरी थिला बुझिबछ ना. आंगा गोटे टेरिटोरी थिला. देन आंगा वाज बियॉन्ड द गंगा. सबुठ इंपोर्टेंट होची अंगाटा गंगा आर पटे थिला राजगृहटे एपटे थिला बुझिबछ. सो ये जो अंगा वगैरह ना ये माने जेते बेले तमरो सुंग रूलर आसी रूल करिया स्टार्ट कले मगधर फिनिश करिवो सुंग है ना. तो जेते बेले अंगा बाद छोट छोट जो डायनेस्टी थिले दे डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट बिकॉज मगधर डाउनफॉल पर एमाने तो निजको इंडिपेंडेंट करिवे. तो अंगास वर आल्सो डिफीटेड. दैट मींस हमें कहबा फ्रॉम गंगा एपटे जदि नॉर्थ साइड देखो अप टू गंगा, साउथ रे अप टू कृष्णा एंड वेस्ट अप टू महाराष्ट्र एंड गुजरात. मथुरा जदि हमें देखा नॉर्थ वेस्ट अप टू मथुरा ह्यूज टेरिटरी दैट वाज ब्रॉट अंडर हिज दैट वाज हमें कहबा लीडरशिप है ना. तो पूरा हमें देखा गोटे ह्यूज टेरिटरी देखि परिबो दैट वाज व्हाट द कलिंगा हमें कहबा डायनास्टी दैट वाज रूलिंग ए ह्यूज टेरिटरी. तो फास्ट हम देखते तो लास्ट रे 13 इयर्स तापर टिके रिवीजन कर दो 13 इयर्स रो 12 इयर्स हम देखिबा the people of Magadha and the Anga bowed to the Kharavela and in way and respect. The defeating that is the what Bruhaspati Mitra, he secured is Kalinga Jinha. Jinha to janicho that is the image of Kalinga which was taken by whom? Nanda. को ए नंद किंग जो महामेघ वाहन थे महामेघ वाहन को नंद डिफिट करके जो तुम इमेज ऑफ कलिंग को नहीं पड़े से ये नॉर्थ को अटैक करूला से इमेज को फेरे आने दैट रेस्पेक्ट बुझीपार कि दैट वाज दैट इमेज वाज द रेस्पेक्ट से टार्गेट सही टार्गेट थिला कि से इमेज को फेरे आनिबा जोटा तुम नंद नहीं जाते फ्रॉम महामेघ वाहनस महामेघ वाहनस जो नहीं जाते ताकू से केमती रिटर्न करके आनिबे एंड फाइनली ही डिड दैट बुझीपार दैट वाज द रेस्पेक्ट द सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट एंड ही आल्सो सक्सीडेड बाय डूइंग दैट. ये जिन्हा को रिटर्न करके आने क्योंकि नंद किंग नहीं जाते मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज व्हाट लिखा है देखा महापद्मानंद हु टुक इट अवे फ्रॉम द महामेघ वाहन बुझीपार एंड ही रिटर्न बैक he bought it back and he also brought a vast treasure of the wealth from the Anga and Magadha. Obviously it मिलिबो because they were the prosperous state. So बहुत important कथा मगध तो बहुत prosperous थिला तो सेठी तो wealth अधिक मिलिबो treasure तो अधिक मिलिबो. That means the scene of that is what Bahaspati that is what Bahasati Mita surrendering at the feet of the Kharavela is found in that is Rani Gumpha Udaygiri. तो ये तुमको देखिए मिलिबो इमेज दैट मीन द सीन ऑफ बाहस्ती मितास सरेंडर करूची जोटा कि सरेंडरिंग टू द खाराबला दैट इमेज इज फाउंड इन दैट इज रानी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उदयगिरी. तो एठू जाना जाए कि दैट मीन्स से ताले नॉर्थ को भी मध्य कंकर्ड करथिले. सो फ्रॉम दिस इमेज यदि हम देखबा दैट इज व्हाट बाहस्ती मिता सरेंडरिंग द किंग in the Udaygiri जो image होची that image shows that his territory expanded up to the north और simple हमें कही परिबा गंगा up to गंगा. ये रहबे तुमरो तांकर जो 12th year हमें देखि परिबा है ना. तो एटा ठीक देखि परिबो तो कलिंगर जो image of Kalinga that was brought back by the Kharavela and that shows his power but the respect he regained which was lost by his grandfather है ना. देन एठी अच्छा एटा हि जिवो ए स्लाइड हि जिवो
बुझ ना बस टिके मन रख बासती मीत हु सरेंडर द किंग then seen from the lekha is dekha manchapuri cave manchapuri cave shows that the installation of the kalinga jina by the Kharavela तो पुणी ताको इंस्टॉल करिचे है ना manchapuri cave तो ये कुआ जे दैट मींस एठी कुआ जे ताको हां तो पुणी ताको रीइंस्टॉल करिचे आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर द Magadha king Kharavela that is what suzerainty was acknowledged by the Nagas ये Nagas माने सेंट्रल इंडिया को रूल करूथले Pandyas in the south तो ये माने suzerainty कहले मतलब एज ए रूलर जहाँ को कहवा बुझे सुजरेंटी मीन्स एज ए रूलर कि हाँ ये ही इज द रूलर और द मास्टर बुझे नहीं आपको किए गले नागस माने रेस्पेक्ट देले एंड द पांड्यास इन द साउथ दे आल्सो रेस्पेक्टेड द नागस सेंट हिम ज्वेल्स आ तुम जानी कलिंग वार गोटे गोटे माने गोटे कहते ना कि कॉज ऑफ कलिंग वार किए थिला ए नागस कारण ये नागस कौन करते गोल्ड चोरी करके नहीं पड़े द ऑर्नामेंट्स ऑफ द किंग अशोकार नहीं पड़े आले कलिंग को कहीं अटैक कले बिकॉज बिलीव करते कि कलिंग गिव शेल्टर टू देम बुझे नागस को से अशोक वार करते बुझे अशोकार ज्वेल को सब मैंने नहीं पड़े ये जो तुम नागस तो नागस माने ही सेंट द ज्वेल्स एलिफेंट हॉर्सेस एंड डियर्स एज अ प्रेजेंट बुझे ये सब गिफ्ट पठेले that the Pandya king sent the jewels to him and the marks of that is what royalty ये royalty तुम देखि परिबो that means हमें कहबा साउथ रे अप टू पांड्यन नॉर्थ रे अप टू गंगा वेस्ट अप टू डेकान तुम कहि परिबो एंड अप टू मथुरा होची नॉर्थ वेस्ट so that was a huge territory gained by the Kharavela और जेतबे ह्यूज टेरिटरी गेन हुए ओनली दैट विल हैव ए फॉल जेतबे बहुत ऊपर को जने लोक जाए फॉल इज ऑट टू बी बुझ बचन कारण एते बड़ एरिया को कंट्रोल करबा बहुत डिफिकल्ट है तो ये ठीक मन रखो दैट इज द पांड्या किंग that is the Pandyan king those who sent the jewels and that marks the royalty but simple कह हाँ they show their suzerainty others that means they also obliged the king Kharavela to oblige करते तो दे नागस वर ऑल्सो सेंट्रल इंडिया रे एमाने मध्य ये धीरे धीरे बहुत सारा डायनेस्टी आसी जाई थे द लास्ट ईयर द 13 इयर्स रो लास्ट ईयर को हम देखिबा लास्ट ईयर ऑफ हिज regnal year 13 year of his regnal year Kharavela probably gave up military activities and turned his attention towards the religious pursuits now tankoro jaha objective thila to defeat and to get back the Jina the image of Kalinga which was matlab he didn't lost that the lost by his grandfathers and he took it back and saved the image of Kalinga he did all the constructive activities all the benevolence activities like for the peasant for the militaries ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ different section ଯେମିତି ଆମେ for the brahmins ପାଇଁ ଦେଖିଲେ all section ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ନାହିଁ that means he now established one of the largest kingdom of his time ତାଙ୍କର contemporary time ରେ ଦେଖିବା he built केते देखो 107 caves at that कुमारिया पार्वती उदयगिरी तो छोट छोट बहुत सारा केव अछि ना सेठी देखो चांबर हिची बहुत सारा 107 तो दैट मीन्स एठी कोन पई ना जैन monks मान पई कहथिले कना खंडगिरी जो उदयगिरी बिलीव्ड दैट वाज एक्सकवेटेड एंड ये थिले जैनिज्म रो फॉलोअर है ना ये जो तुम्हारा Kharavela ही वाज ए फॉलोअर ऑफ जैनिज्म नॉट बुद्धिज्म बट तमे एक कथा कहि परिबो नहीं कि ही वाज ए बायस्ड रूलर सिंपल तमे कहबो ही वाज ए सेक्युलर लीडर कना सबले बड़ लीडर ही सेक्युलर हे थाए नहले तमे रूल करि परिबो नहीं फॉर एग्जांपल अकबर सेक्युलर थिले तो always the big kings they would be secular जो माने renowned बुझ परछन they would be secular otherwise तमे संभाली परिबन that would be very difficult to maintain that बुझ परछन otherwise there would be anarchy बुझ ये तमर religion issue आसीबो now एबे हम देखिबा तांको पई से केव वाले and number of caves 117 caves and for the other religions that is the Sikhs and Arhats they were the different clans जेमति मॉक थिले ना ए माने भी सेमती वन टाइप ऑफ हमें कहि परिबा कि रिलीजन एजेंट तो मु कहिबे लाइक जेमती प्रीस्ट गोटे सेक्ट हे गेला मॉन्क गोटे हेला द सीड एंड आर्हट्स
तो दिस वाज हिज नोबेल सर्विस आम देखिपर जैन तुमको तो कही से जैनर फॉलोअर्स थे एंड जैन मॉक्स से यहाँ हूँ जैनिज्म ये डिवाइड होती तुम खंडगिरी उदयगिरी दिस केव्स जी केव्स अच्छे ये सब जैनिज्म दि जाए बुझे तापर जैनिज्म से टाइम दैट मीन्स आम कंटेम्पोरारी कहवा जैनिज्मटा तुम ओडिशा रे दैट मीन्स आम कहवा जो हिस्ट्री आमर जो अटैचमेंट और लेट्स से जोटा कि we came in touch with the Jainism early as the Kalinga dynasty. तो सी टाइम रे मध्य थे he revived the art and architecture of the ancient Kalinga, that is what मुख्य कला है ना, which was going to extinguished है ना, and ताकू डिफेंड करिसेंती the different cave of उदयगिरी खंडगिरी ये तो सब होती इमेजेस ऑफ तीर्थंकर तुम जानिछ जैनिज्म को मैंने प्रोपागेट करो तीर्थंकर सब जमती महावीर ये सब कौन थे दे वर द नंबर ऑफ तीर्थंकर्स बुझे जो मैंने प्रोपागेट करूले ट्रीज क्रीपर्स इमेजेस रॉयल सर्वेंट्स वेर बिल्ट बाय हिम इन दैट ईयर तो ये से फोकस करिसेंती दैट मीन्स 13 इयर्स रे के लास्ट रेगनाल इयर्स रे ये सब होईची तो एटा को टिके ध्यान दबो तो आ सब इंपोर्टेंट कथा ये तुम जस्ट जब इमेजिन करो कि 13 इयर्स रे कहीं है आम जानूचे केमती ये 13 इयर्स रे ही होईची बोली बिकॉज एते सारा जो इनफॉरमेशन एमती जदी आगुरु जदी एस्कावेशन लेट्स से कि जदी से इनिशियल ईयर रे करिथांता एते सारा इनफॉरमेशन तो रही न थांता केमती आसीबो जहाँ जहाँ सब हिस्ट्री रे होईची ताको सब क्यूमुलेटिवली रिप्रेजेंट करचंती दैट मीन्स ता पूर्वरु किछि वर्ष से बितेइचंती एज ए किंग तापर ताको रिप्रेजेंट करिचंती नले रिप्रेजेंट कुआडू करिवे इनफॉरमेशन कुआडू आसीबो तो दैट इज व्हाई दैट मीन्स एथ्रू बिलीव करा जाए कि दैट वाज रिप्रेजेंटेड एंड ऑल दैट एविडेंसेस सेति पई ये तमरो नागज कथा नहीं जाओ कि हमरो मगध कथा नहीं जाओ किंबा दैट इज हम देखले अंगा कथा नहीं जाओ अंगा टेरिटरी ये सब हमको जना पड़ुची कोठी इंस्क्रिप्शन को है ना ये पूरा 13 इयर्स को मैं देखले and the conclusion तापर हमें conclusion देखिबा तो दैट मीन्स खाराबेला में फास्ट देखले कोन मतलब 13 इयर्स रु जदि हम देखो फर्स्ट ईयर से कोन कले रिकंस्ट्रक्शन कले कलिंग नगर को रिकंस्ट्रक्शन सेकंड ईयर रे कोन करबे से मिलिटरी ऊपर फोकस करिवे रिवाइव करबे एलिफेंट टू आरंभ करे देन ही विल लीड एक्सपेडिशन टुवर्ड्स द सातवाहन एंड जे कृष्णा रिवर को जीवो कृष्णा रिवर चेंज जीवो एंड ही दैट इज कॉन्कर्ड कोन से सातवाहन रूलर दैट इज सातकर्णी गौतम पुत्र सातकर्णी वन रूल करूले बट जो टेरिटरीटा कंकर्ड करते से जो कैपिटल जो गोटे सिटी थिला जाको से कैप्चर करते दैट इज हाँ ऋषिका नगर को से कैप्चर कले देन थर्ड ईयर से मैरी मेकिंग कले बुझिपरछन जो थे आर्ट दे हम देखिबा डांस म्यूजिक आर्ट एबो ताको प्रमोशन कले देन फोर्थ ईयर रे कोन कले से डेकान को जीवो बुझिपरछ डेकान को जीवो एंड हियर भोजोकस एंड रथिकास बुझिपरछ दे वर डिफीटेड तो पूरा गुजरात रीजन एंड ताथरु भोजोकस रथिकास वर डिफीटेड एंड हैंडसम बूटी कलेक्शन कले से माने मध्य दे आल्सो एक्सेप्टेड ही एज द रूलर देन नेक्स्ट ईयर कोन करबे बेनेवोलेंस नेक्स्ट ईयर रे कोन करबे बेनेवोलेंस एक्टिविटीज कर जेमते कैनाल इरिगेशन ए सब ऊपर फोकस कले बुझिपरछ तापर वर्ष कौन कले सिक्स्थ ईयर कौन कले वेलफेयर एक्टिविटीज बुझिपरछन तो डिफरेंट जो सेक्ट जेंति ब्राह्मण फ्राह्मण एमन को वेलफेयर एक्टिविटीज कले तापर अगेन ही विल प्रिपेयर्ड फॉर द वार तो एबे कोठी कि 7th ईयर अच्छा 7th ईयर फादरहुड नहीं अच्छा आउ तो किछि नहीं तार इंपोर्टेंस खाली फादरहुड देन 8th ईयर नॉर्थ and this time he will got the up to Goya बुझिपरछन आ गयाज रे के रूल करथले से टाइम रे यावानस वर रूलिंग एंड दे फ्लेड अवे बुझिपरछन तो ये टाइम रे 7th ईयर तो दैट मींस पुनी 8th ईयर रहिबो एटा 8th होला ने देन तमरो 9th ईयर रे तापरे 10th 11th
जो पांड्या चोलर्स नागोस ये समस्त मिसिकी करिवे and they were also defeated. The conclusion हम लिखी दिवा. Thus the Kharavela was undoubtedly a great conqueror and the empire builder. ये ताले खाली कीवर्ड लिखियो. He was a great undoubtedly यार किसी डाउट नहीं. He was a conqueror. He was a builder in early phase of the Indian history. That means हम कहबा कि गोटे unity आनी परिथिले से. बुझियो से. He can be compared with a Maha that is Padmananda and Chandragupta Maurya, Ashoka, Samudragupta. This respect के यही जदि आमे के यही conquest रू देखिबा and as a builder he would be compared to the Mahapadmananda, Chandragupta Maurya, Ashoka, Samudragupta तांको सहित compare करा जाए एइथिपाई because its territorial extension and the conquest which was unparalleled. He was a great military आमे देखि परिबा genius है ना great military genius. He possessed a vast army that is but composed of the impressive elephant force, cavalry, infantry and the chariots. ये सब तांकर रखिथिले से ऑलरेडी हम जानचे कि सेकंड ईयर रे ताको फोकस करथले कैलवरी ऊपर फोकस करथले एलिफेंट ऊपर फोकस करथले इन्फैंट्री ऊपर फोकस करथले एंड चैरियट्स ऊपर फोकस करथले his political sway but ताको हम कहबा expansion extended in the north as far as मथुरा ऑलरेडी हम कहिचे ना साउथ रे हम देखिथिले पांड्या ऑलरेडी मु कहि सारी छी वेस्ट रे हम देखि सारी अप टू गुजरात है ना जो भोजोकस मन को डिफेट करथले तो खाराबला इज रिमेंबर्ड as a but protagonist है ना protagonist and a patron of Jainism. Already हम देखिथिले कि जैनारो से फॉलोअर थे. He was a follower of Jainism सेथिपे एते सारा caves करथले for the monks and these were the ये सब कोन थे they were the ये जो केप मन को कोन कहआ जिवो ताले दीपकर केप कहिथिले ना. So these were the Biharas. ये सब कौन होगा? These caves were the Biharas. Largely they were the Biharas. है ना? मैं तुमको कहती कि केप दीप का था गोटेला चैत्या आ गोटेला बिहारा बिहार सेति पई कोआ जाय एबे देखिवो कोनते ना एटा कलिंग बिहार एटा अमक बिहार ए बिहार कहीं कहउची ए सेबेटू अछि बुझि परछन बिहार कहले वेयर monk resides people resides बुझि परछन सेति में बिहार कांसेप्ट सेबेटू अछि तो ये होगो पूरा खारबल रमी देखि देले जहां भी तांकर थिला रेगनल इयर्स तो एटा टिके मन रखिबो तांकर 13 इयर्स एते कि ही तुमको खारबल ऊपर जहां भी क्वेश्चन आसीबो लेट्स से तुमको क्वेश्चन आसीबो कि डिस्कस खारबल why or let's say why did Kharavela is compared with the Samudragupta or Ashoka कौन पर because of his bravery because of his expansion because of his हमें कब as a builder माने बाको he was मतलब rose to a position from nowhere हम कोई परिबा किछि नथिला बुझि परछन but he built a massive empire at the end of the day तो इसे 13 years of regnal रे तो that shows his capabilities बुझि परछन and the audacity सेठिरो जणा पड़िजो तो सेई थारे एक्सपांशन तुम लिखिबो और सेम जिंस को रिपीट करिवो कि को काको केते बळे से एक्सपेडाइट करूची एतरो नॉर्थ को केतरो साउथ को ट्वाइस वेस्ट को हमें देखि परिबा वंस नॉर्थ को मध्ये देखि परिबा ट्वाइस बुझि परछन तो ये आरो जणा पड़ुची दैट मींस वाज हैविंग ए स्टेबल सिस्टम आ जे एक्सपेडाइट करूची ना जे जो घर जति सेफ नै से एक्सपेडाइट केमति करिवो दैट मींस ही वाज हैविंग ए स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम एंड मैच्योर सेथि पई जने अटैक करि परिबो ना आ जणो को फोकस करि परिबो नाले फोकस करि परिबो सो दैट शोज हिज हम कहबा कि जोटा कि तांकर क्रेडिबिलिटी एज ए रूलर एज ए बिल्डर तापर तांकर ब्रेवरी ते तुम कहि परिबो हां जेमति पांड्यास हे गेला चोलास हे गेला नागस हे गेला भोजकस हे गेला सातवाहनस हे गेला मगधस कथा नै छ देन हमें सब आंगा कथा नै छ ये समस्त यावनस कथा नै छ दे ऑल फॉल इनटू द लाइन तो सेति पे दैट शोज हिज क्रेडिबिलिटी सही थी आसुची लेट्स से तांको कहै जे कि आर्ट एंड कल्चर रे तांकर कंट्रीब्यूशन तुम लिखो आर्ट एंड कल्चर तो से लिखो जो मैरी मेकिंग करूथले डांस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जेते से प्रमोशन करूथले केप आर्किटेक्चर देखिबो इंस्क्रिप्शन कले इमेजेस डिफरेंट इमेजेस आज आर्किटेक्चर रिबिल्ड कले जेमति कि कैनाल हे जो कि तमर बिल्डिंग जो एम्पायर कथा नै जो
तो ये सब को आज एन आर्किटेक्चर से कही पार आज एन स्कल्पचर एज ए स्कल्पचर तुम केफ वगैरह कही पार कि इमेजेस वगैरह एज एन आर्किटेक्चर केनाल बिल्डिंग ये सब कले बुझ देन आज ए एडमिनिस्ट्रेटर तुम कह कि आज एन एडमिनिस्ट्रेटर जमी से सब्जेक्ट मान को प्लीज करके रखुले बुझे ना इवन मैरी मेकिंग तो देते बाकी वेलफेयर स्कीम जमती कि टैक्सेस छाड़देले कि इरिगेशन करदे बुझे तो बहुत सारा बेनिफिट्स होते आज ए बेनेवोलेंस रूलर तो बस जहाँ भी अच्छे ना से भितर ही तुमको मॉडिफाई करके आंसर लिखार अच्छे यही भितर सब हो तो क्वेश्चन टिके लिखी दे था 3-4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन why Kharavela is compared with Ashoka and other great rulers why Kharavela is compared with Ashoka and other great rulers fast second question discuss the 13 regnal years of 13 regnal years हाँ REGNAL regnal years of Kharavela why why लिखा substantiate your answer or yourself जा लिखि पार Kharavela as a benevolent ruler Kharavela as a benevolent ruler benevolent ruler or benevolent 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 ruler है ना मतलब गुड रूलर बा आमे जाऊ कहबा कोन काइंड रूलर बुझबो देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग Kharavela आर्ट एंड आर्किटेक्चर से तुम कलिंग नगर कथा लिख आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग Kharavela से तुम केनाल कथा लिखिपर इमेजेस कथा लिख जिते केप सब या कथा लिख देन तुम रिबिल्ड जो कर बुझे एम्पायर वगैरह जो से कले सब लिखिपर एंड द लास्ट क्वेश्चन लिखि दियो व्हाट वाज द सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग हिज रूल व्हाट वाज द सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग हिज रूल कहले तांको टाइम रे सर्कमस्टांसेस कौन थिला नॉर्थ को किए रूल करथला साउथ को किए रूल करथला वेस्ट को किए रूल करथला नॉर्थ ईस्ट को किए रूल करथला ये सर्कमस्टांसेस बुझ बसन ये सर्कमस्टांसेस को जानिबा दरकार ताकू कौन करियो जेतो एंशिएंट हिस्ट्री हमें पढ़िबा सेतरे तमरो कनेक्ट हो जिवो ओके एक्चुअली से कलिंग वार स्लाइड टा मोर आरो लैपटॉप रे रही जाई तो जो बुझ बसन सेटा मु कहि देबी जमती तुम नागज ना आपको मन रखियो कि नागज कहा जाए कि दैट वाज कौन जो नहीं जो फिशरमैन जो झीटा कह जाए कौन ताको ना कौन थिला कौन कौन थिला ना कि करीना कपूर किए कहूँ करीना कपूर कौन गोटे थिला अच्छा किए ऑनलाइन रे किछ कहि परिबो कार मन अछि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गर्ल फॉर whom it is believed that Ashoka fell in love द फिशरमैन रो गोटे झील थिला कहते कि अशोका किरीबिथु हाँ किरीबिथु तो कह जाए किरीबिथु दैट ही फेल इन लव दैट गर्ल द फिशरमैन रे थिला से तांकर मैरिज आउ जन सहित फिक्स करले जो ये वार करते बट हाँ किरीबिथु ना जा भी कोई अच्छा जो मैंने ऑनलाइन अच्छे शुणा हो ना सो ये दैट मीन्स अच्छा आसूची तो आवाज
है ना देन तो आपको तुम मैंने लिखिबो जो तुमको पांचटा क्वेश्चन कहली केतेटा क्वेश्चन कहली चारटा ना पांचटा कारुबती अच्छा हम मुझे मोर से मन ही पड़ुनी से करीना कपूर कहीदेल ना मोर से मोर तो बिलीव करा जाए बट से नथिला बट ये जो नैरेट ये जो नैरेट है ना आपको कहा जाए नैरेट ये भी स्प्रेड करे बट इट वाज नॉट द रियल फैक्ट भाव अशोका जे कि रूलर मतलब से फिशरमैन ये गप नुह बुझे तो ये दैट वाज ए नैरेट बट एग्जैक्टली कौन था कि जदि कलिंग वार तुम देखो जोटा कि कलिंग वार पर खाली कही दूसरी क्या भौमकर आज पढ़े सरबनी 261 बीसी रे कलिंग वार होता बुझे ना अशोका अशोका एक्सपेडिशन टुवर्ड्स द साउथ ना जदि इंडिया मैप को तुम देखो ना कलिंग वाज हियर द कलिंगा तो जदि इंडिया मैप को ड्रॉ करी तो कलिंग वाज हियर ये हूँ कलिंगा but Ashoka as a person as a ruler he conquered everything except this one Kalinga कलिंग को छाड़े बाकी सबू से कंकर कर देता टेरिटोरी चारिपटे मतलब आम कह सिंपल जो कलिंगर चारिपटे केवल थी अशोकार टेरिटोरी ना अशोका जिते नॉर्थ रु साउथ को मूव करते डिफिकल्ट होता कारण कलिंगा मझे आसी जाऊँगी तो डिफिकल्ट होता टू हाव द एक्सप्लोटेशन टुवर्ड्स द साउथ whenever he required to have the expedition or to move the military towards the south हमको difficult होता because of this Kalinga तेणु ताको मूव करके जीवाको पड़ूला फ्रॉम द डेकान तो तापी गोटे कौन था ये गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी प्लस जदि आम देखा मुझे कजेस कहीदे फास्ट जियोग्राफिकल लोकेशन और द एक्सेसिबिलिटी मूवमेंट बहुत ही मूवमेंट गोटे प्रॉब्लम थिला फर्स्ट पॉइंट मूवमेंट वाज ए प्रॉब्लम बाकी मुझे काली खाली स्लाइड देखेदी तुमको कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम कजेस कौन थिला देन जो कारुबाती तुम इंसिडेंट्स कथा कहलो कारुबाती कारुबाती तो बत्ती है ना तो दैट वाज ये गोटे ना ये होची मु जोटा के तुमको कहली दिस वन इज ए टॉक ओनली यार किसी एविडेंस नहीं सब इंपोर्टेंट कथा डज नॉट हैव एनी बैकिंग तार किसी बैकिंग नहीं ये गोटे लाइक स्टोरी टाइप रो कहई लोक शुणी मन रखी और सेटा समस्त मन बट वार के ये गोटे वार हुए मन करूनी बट वार सब बेले ना वार हूँ गोटे कनक्लूजन सब इंपोर्टेंट कथा यहीटा बहुत कम लोग जानते वार हूँ गोटे कनक्लूजन कनक्लूजन अर्थ फॉर एग्जांपल तुम यूक्रेन कथा नहीं जाओ ये वार कौन गोटे दिन रहीगला बहुत सारा इंसिडेंट मिसी 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 लास्ट फ्रस्ट्रेशन है वार बुझे तो सेमिति अशोका भी गोटे छोटिया मतलब गोटे झील वार कर अशोका तो यहाँ इम्पॉसिबल बुझे ओनली फॉर द सेक ऑफ ए गर्ल एंड ही विल वार ये तो इम्पॉसिबल ये गोटे स्टोरी सिंपल बुझे टॉक आम कह तो ताले प्रॉब्लम कौन था जोटा मुझे कहली दैट इज द कलिंग वाज लाइट इन बिटवीन हिज टेरिटोरी तो यार जो जोग्राफिकल लोकेशन थिला कलिंगर जोटा अशोका को एक्सेसिबिलिटी साउथ को करिबारे प्रॉब्लम थिला देन जदि नेक्स्ट टाइम देखिबा कोन थिला इश्यू कोन थिला तो फास्ट कॉजेस तुम बुझी परबे बे कारुबती देन इट वुड बी हम कहबा कि एक्सपेक्टेशन बा एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम होतला थर्ड भाव अशोका होल ऑफ इंडिया को जीति सारी अप टू अफगानिस्तान बट पाखरे तांको टेरिटोरी को लागिकी अच्छी कलिंग जहाँ से he did not own that one so that will also put a question mark on his ability लोक रेज करेंगे कि नहीं यार सब अफगानिस्तान जाए नहीं गलानी श्रीलंका जाए गलनी बट यू आर नॉट एबल टू कंकर द टेरिटरी व्हिच इज क्लोज टू योर बॉर्डर ताकू तो तुम पारुन द कलिंग दैट मीन्स दैट विल रेज ए क्वेश्चन मार्क ऑन हिज एबिलिटी तेणु से चैलेंज बोली नेले कहला दैट मीन्स कलिंग ही टुक कलिंग एज ए चैलेंज बुझिपार एंड द प्राइड दैट वाज द सिंबल ऑफ प्राइड तांको पई प्राइड थिला कि नहले निजर ये बुझिपार इमेज खराब हो से कहले ठीक अच्छे आई विल चैलेंज दैट वन तो ये बहुत इंपोर्टेंस थिला देन आम जो देखा अशोका तुम जानिछ तांकर जो पुओ झी मान को पठाउथले कौन पाई बुद्धिज्म को स्प्रेड कर जमी श्रीलंका साइलम ये सब को सब पठाइले इंडोनेशिया मालेशिया ये सब पठाउथले तो तांको पई ताको पोर्ट्स दरकार थिला तांको पई पोर्ट तांको पई
ट्रांसपोर्टेशन एंड दैट वाज द कलिंग जो एंशिएंट पोर्ट सब कलिंग रे थिला तो दैट रिक्वायर्ड द accessibility ऑफ द नेविगेशन तो नेविगेशन पे accessibility दरकार थिला जोटा कि कारण से मगधर थिले तो मगधर accessibility मिलिबन कोस्टल लाइन तो डज नॉट दैट डिडंट हैव एनी कोस्टल लाइन तो कलिंग पाखरे कोस्टल लाइन अछि आ इटा पाखरे मध्य so that means that is why ports and harbor ପାଇଁ trade ପାଇଁ that means simple मु कहबी trade ପାଇଁ for the trade and the navigation and it would be navigation ପାଇଁ कलिंग बहुत रिक्वायर्ड थिला तांको ପାଇଁ ना बुझा पड़ो that is why he took it and सेति ପାଇଁ से कहले कि at the any cost we need to have that one कलिंग and कलिंग पकर सबटु इंपोर्टेंट हला wealth तापर से wealth बुझि बछ देन आसे तोर wealth तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट मु तुमको कहली ना वार सबले क्यूमुलेटिव इफेक्ट थाए गोटी कारण जो वार हुएनी केबे तो वेल्थ बहुत थिला बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ओडिसा पखर अधिक कारण ये एक्सप्लॉइट हेई नथिला मगध जो ता पूर्वरु ताको नंद रूल करिछि बुझि बछ ना दैट मींस रिसोर्स धीरे 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 यूटिलाइजेशन अधिक हेछि बट ओडिसा रो जदि हम कहबा दैट टाइम द कलिंग आर रिसोर्स ता न्यू थिला पूरा एंड भरपूर एबे भी देखो तो रिसोर्स ये गोटे वेल्थ ऑफ कलिंग दैट वाज अनपैरेलल वेल्थ ऑफ कलिंग अनपैरेलल सी टाइम कंटेम्पोरारी बुझिबो दैट मींस वेल्थ ऑफ कलिंग द accessibility फॉर द पोर्ट्स एंड द ट्रेड्स फॉर द दैट मींस जोटा कि से चैलेंज बोली के देले कि एटा भी तुम कहली देन मु तुम कहली accessibility दरकार थिला कारुबती इंसिडेंट्स है ना तो ये सब क्यूमुलेटिव फैक्टर थिला फॉर द कलिंग बुझिबो ये क्यूमुलेटिव फैक्टर and the last and that is the नागस जोटा आसबे तोर नागस माने कोन करथिले नागस माने ट्रेड करूथिले ओडिसा सहित मतलब दैट टाइम कलिंग द नागस दे वर डीलिंग द ट्रेड विथ कलिंग ट्रेड करूथिला कलिंग सहित इट इज बिलीव्ड कि दैट दे स्टोल बुझबो they stolen the jewels of कलिंग के माने कलिंग जो सॉरी अशोका बुझबो तो अशोकार ज्वेल्स को चोरी करी नैथिले नागस आउ अशोक रागिले एते बिकॉज दे वर डूइंग ट्रेड विथ कलिंग कलिंग से ट्रेड करथिला दैट मींस एई पट ए माने ही ताको शेल्टर देइचंती तो सेथि पे से वार कले सो दिस वर द 6 पॉइंट ये 6 पॉइंट जो ही कलिंग वार हितला गोटी पॉइंट जो बुझिबो तो दैट लेड टू द वार ये पॉइंट पूरा मन रहिजबो अच्छा जो माने ऑनलाइन रो बुझा पड़ोची है ना सो दीज वर द 6 पॉइंट जोटा कलिंग वार ये खाली ये जो कारुपति ये सुनिए पे भल लगे ना बुझी पड़ते बट मेन रीजन किसी अलग थिला रीजन थिला प्राइड रीजन थिला रिसोर्स रीजन थिला एक्सेसिबिलिटी रीजन थिला एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी सेटा को तो हम कहि परिबा ना एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी बिग रूलर के चाहिबो कि मो पाखर गोटे आउ गोटे के थाउ तो से चाहिबो एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी सो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव थिला सेति पे से वार करथिले बुझि पड़छ तो अब भूकिला थिले अशोक एज ए किंग तुम जानछो फॉर द टेरिटरी ही वाज एपेटाइट फॉर द टेरिटरी अब निजो पाखरे केमती छाड़ दबो कि गोटे बॉर्डर को लागि छि गोटे एरिया को छाड़ दबो सेटा त हेई परिबोनी आउ तेजी तुमको कहजबो देन व्हाई कलिंग वाज डिफीटेड अशोक काहे कि जितेला रीजन को कोन पाई अच्छा जो माने ऑनलाइन रे अच्छो जणा पड़छ ना तुम को सुनाउची समस्त को सो एबी दिन तुमको क्वेश्चन पचार जिवो कि व्हाट लेड टू द विक्ट्री ऑफ अशोका ए कजेस बुझा पड़ी जिवो ना कजेस कोन ना कोन पई अशोका तले जितिले कोन पई मो स्लाइड काली देखे दी है ना नाले आज इवनिंग रे देखे जाय इवनिंग रे पढ़े जीवा आउथरे तो ई वीक रे खत्म करी है ना इवनिंग रे 2.5 आवर्स कर नेबी बुझबो तो ये काहे कि जितिबार फास्ट होचे लीडरशिप ये कॉमन पॉइंट लीडरशिप बुझबो obviously जने एते बरो वार को जदि करूचे दैट मींस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ओके ने प्रॉस्पेरिटी वाज देयर आपकरे प्रॉस्पेरिटी थिला आपकरे स्ट्रांग मिलिटरी में कहि परबा आ एलिफेंट रो अभाव नथिला इन्फैंट्री रो अभाव नथिला चैरियट्स रो अभाव नथिला तांक परे कैलवरी कथा लिखि परिबो इन्फैंट्री कैलवरी एलिफेंट्स कारण ये जेते जगह जीती चंती समस्त एलिफेंट तांको देई चंती एज ए गिफ्ट कैलवरी बढ़ी तो धीरे धीरे से लास्ट ही कलिंग वार कले ना
तो लास्ट जेतले करूची एते वेल्थ को अक्युमुलेट कला पर लास्ट वार करूची दैट मीन्स दैट द माइटीनेस ऑफ कलिंग के लास्ट ही से कलिंग को रखिथिला टारगेट करके लास्ट ही कलिंग को वार करिबार अछि दैट मीन्स सेही भितरे तर कैलवरी इन्फेंट्री एलिफेंट ये सब कुछ से स्ट्रेंथन कर देथिले एंड फाइनली ही टुक द एक्सपेडिशन अगेंस्ट द कलिंग तो ये तमे कहबो देखो ये बुक रे थाउ न थाउ दैट डज नॉट मैटर सर्कमस्टांसेस मैटर हिस्ट्री जे लिखी से थोड़ी सब सर्कमस्टांसेस को देखिए लिखी माइट भी से किसी मिस कर दे पारे हाँ कि नहीं एटा ट्रू फैक्ट कि नहीं हिस्ट्री गोटे हिस्ट्री नुह दैट इज द इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम रे जहाँ हेची और से पर्टिकुलर टाइम रे किछि जो हेची तार किछि लॉजिक भी थिबो ना खाली गप बोले आम मन रखा तार किछि लॉजिक थिला तो जदि अशोका को पचरा जीव कहीं जदि कौन सी बुक रे तो नहीं कि अशोका कहीं कलिंग को लास्ट अटैक कला कौन सी बुक रे अच्छी कौन सी हिस्टोरियन भी कहीं तो आम सर्कमस्टांसेस को देखिए आंसर लिखा कि हाँ ये सर्कमस्टांसेस थिला तो जदि से लास्ट रे करूची माइट बी अजम्पशन प्रथम रू तांकर भल रिलेशन थिला अजम्पशन टू पर रिलेशन खराब हो गला एमती ही पारे ओनली वी कैन अज्यूम एंड राइट द आंसर ये भले क्वेश्चन जितने आसो तुमको बट वी हैव टू प्रेजेंट इन अ सिस्टमेटिक मतलब गोटे मैच्योर आंसर हवा दरकार ना कि हाँ मन इच्छा लगे आम अजम्पशन करें कि माइट बी ही वाज अर्ली ए वेरी फ्रेंडशिप रिलेशन थी पारे सहित किसी प्रॉब्लम नाला माइट बी तार लास्ट फेज को एमती होता और थर्ड अजम्पशन हो पारे कलिंग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग से लास्ट रखी थे कि लास्ट मको आनेक्स करेंगे तृतीय हो पार ना भाव तुम निजे पुट कर देख तृतीय किसी हो पार अजम्पशन से बेसिस से कलिंग को कला और तार फैक्ट्स आम देखीदे बुझीपार कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट ब्रॉट हिम और दैट गॉट द व्हाट आम कह अटेंशन ऑफ अशोका से अशोका आसिले अटेंशन कले एंड फाइनली ही वॉन द वार आउटकम कौन रही वार आउटकम कौन रही तुमको कह वार आउटकम कौन कलिंग वार आउटकम को आउटकम कौन रहा आउटकम को दी भाग में भाग कर गोटे है पॉजिटिव गोटे है नेगेटिव फास्ट आम देखा लेट्स आम कह पॉजिटिव कौन आउटकम रो पॉजिटिव जदि वार देखा कि ही क्विट द वायलेंस ही क्विट द वायलेंस को छाड़दे जाकू कहुए कौन फ्रॉम द चंदा सत्ता टू धर्म सत्ता एंड ही सॉट द बुद्धिज्म पाथ को नहीं गले कि पीस बुझीपार तो ही दैट मीन्स व्हाट आम कह टुक द पीस पाथ के रेस्ट ऑफ द लाइफ को पीस रे जीवा बुझीपार तो पीस इज अप्रोच ना न्यू अप्रोच आसीगला पीस है ना सिंबल से अशोका कहुए सिंबल ऑफ पीस भी है तो ये पॉजिटिव होची कि पीस आसीगला तांकर चेंज हो गला एंड क्विट करदेला वार पॉजिटिव रे जदि हम देखा देन कौन कले रिलीजन आम बुद्धिज्म को प्रोपागेट कर लगी गले तापई स्तूप बनवा तापई केव्स बनवा तापई मिशनरी को सेंड करवा ये सब काम कले एमती श्रीलंका को पठेले इंडोनेशिया पठेले ये सब पठेले देन केव्स वगैरह तैयार कले तापई बहुत सारा केव्स एमती तुम बराबर केव फॉर एग्जांपल धौली कथा नहीं तुम धौली केव कथा नहीं जाओ अच्छा ये आउ गोटे आउटकम देखा तुमको आर्किटेक्चर सब इंपोर्टाट जो एलिफेंट जो फ्रंटल पार्ट ऑफ एलिफेंट जोटे धौली रे एबे भी अच्छी दैट आर्किटेक्चर के प्रॉब्ली दिस इज द ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा ता पूर्व आर्किटेक्चर ओडिशा रे नथिला कि जो आर्किटेक्चर इवॉल्व कला ओडिशा रे ये ता पूर्व नथिला ना ता परे सिना खारबेल कले बुझ पड़छ तो दैट मींस ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको तुम लिखि परिबो ये आसीगला बुझ पड़छ देन स्प्रेड बुद्धिज्म ओडिशा को बुद्धिज्म भी आसला कंटाक्ट आसला मगधर कंटाक्ट रे तो बुद्धिज्म आसीबो ऑब्वियसली से तो स्तूप ताप आसो कौन स्तूप फॉर्मेशन हम ये सब आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो दाको आम कह जाको कौन डिस्पर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो नॉर्थ थ्रू आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्प्रेड है साउथ को बुझीपार बिकज ऑफ द कम्युनिकेशन ये तुम पॉजिटिव आसो ये सब तुम पॉजिटिव नेगेटिव रे तुम लिख कि लाक्स ऑफ सोल्जर डाइड तो कहुए कि 1 लाख सोल्जर डाइड होता एंड थाउजेंड्स गॉट वोंडेड बुझीपार कहुए कि दया रिवर पूरा रेड हो जाता बिलीव करा जाए गोटे पॉलिटिकल वायलेंस स्टार्ट है आकू पुणी अशोका जदि आम देख अशोका स्टार्ट करते एंड कले खारबेला बुझीपार
ତେଣୁ सी पुणी आउ थे इनभेट कले बुझिपार तो ये जो तमर जो दैट इज आम जो कह जो हार्सनेस और जहाँ भी तुम कह द पनिशमेंट हार्सनेस जहाँ भी कह दैट वाज इनफ्लिक्टेड बाय द राजगृह मु कहबी और द मगधस राजगृह एथि कौन कहीं राज नंदस भी थे बुझिपार तो मगध जिते तुम देख मगध से मगध कौन कि मगध को डिफरेंट टाइप डिफरेंट रूलर रूल कर नंदस हो कि तुम सुंगस हो कि तुम कौन दैट इज द मौर्यन प्रथम थे नंदस तापर थे किए मौर्यंस तापर सुंगस तो ये मैंने टाइम टू टाइम मगध को रूल कर तो ये जो रिभेन्स से खारवेला पुणी निजे आटाक कले आउ जीना को जो आनिले तो ये गोटे भी आम तुम कहीपर दैट इज ऑल्सो नेगेटिव बुझे साइन टू वार दैट इनफ्लिक्टेड द वार से वार हो तो पॉजिटिव नेगेटिव एमती तुम लिखिपर बट पॉजिटिव साइड आर्ट एंड कल्चर को ध्यान से आर्ट कर आर्ट एंड कल्चर के जहाँ कहने डिफ्यूजन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ आर्ट एंड कल्चर डिफ्यूज है केप ट्रेडिशन डिफ्यूज है केप ट्रेडिशन अशोका स्टार्ट कर देता ना दैट वुड बी ना नहीं सेटा तो वेस्टर्न इंडिया रे ना आर्लीएस्ट हूँ अशोका वेस्टर्न इंडिया रे हूँ सातवाहन केप ट्रेडिशन आड़शा रे हूँ तुम खारवेला बुझिपार बट से जो ट्रेडिशन टा डिफ्यूज है ना जना नाला ना केप एमती हुए बोली तो दैट ट्रेडिशन गॉट डिफ्यूज टू द साउथ तो ये जो केप ट्रेडिशन स्तूपस ट्रेडिशन कथा नहीं जाओ ये आसला तो दैट इज वाई ये सिग्निफिकेंस तुम लिखिपर है ना बाकी आज तुम इवनिंग रे कलिंग वार तुम अलमोस्ट कहीदेली सबकि बुझीपार ना खाली स्लाइडटा देखईदेवी आउ बेस किसी ना से तुम आउटकम भी कहीदेली कजेस कौन बुझीपार सातटा कजेस तुमको कलिंग वार कहीदे आईटा ही से कजेस आउ कि कजेस ना बस से गोटे मैप ड्र करके देखेब कौटी कलिंग था कौन था आउटकम कौन पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम्स ये सब आम देखीदे खारवेला तो आज पढ़ी तो नेक्स्ट ताले इवनिंग रे भौमकर आउ कलिंग वार भौमकर कलिंग वार क्या भौमकर बहुत इंपोर्टाट ये अलरेडी ओपीएससी पचारि सारी एथे भी आर्ट एंड कल्चर बहुत सिग्निफिकेंस अच्छी भौमकर बुझ आर्ट एंड कल्चर तेणु भौमकर को आम पढ़ा है ना तो इवनिंग रे ये दुईटा टॉपिक को आम सारिबा।